Hello, welcome everyone. In this video, we are going to look at the quizzes that I upload every Thursday on the YouTube community, and where you can find a lot of questions on different sustainability topics. So now on, I am starting this new activity where I'll prepare a video about the answers for, let's say, for around 1 month. So you will see this kind of video once in every month, summarizing all the questions, their answers and discussion about it. So let's start, and I'll majorly discuss this initially in English and later on I'll discuss it in Hindi. तो सबसे पहले ये वीडियो में इंग्लिश में डिस्कस करूँगा और एट द एंड इस वीडियो के एंड में इसके हिंदी क्वेश्चंस को भी एक बार मैं यहाँ पे आपके सामने रखूँगा. As you have subscribed to the channel, so hope you attempt these questions every Thursday when I upload it. So let's start. This question is just about day before yesterday, so I'll leave it for now because we will get more answers as the week progresses. Around 58 answers are there, but let's understand the previous week's 4 questions, previous month's 4 questions, and let's see what are the answers. So one question was, how often should business responsibility and sustainability reporting, which is called as BRSR, reports be published by companies? So how often it should be published or prepared? So as you can see on the screen, around 77% of the people have answered annually. Yes, that's correct. The answer the other people have selected biannually, quarterly or as needed. So that's not the true, because as per the SEBI, it requires top 1000 listed companies to mandatorily publish this BRSR report, that is Business Responsibility and Sustainability Report, as a part of their annual report on a mandatory basis starting from financial year 2022-23. So this is very clear that it has to be published annually. तो biannually, quarterly और as needed ये करेक्ट आंसर नहीं है. हम ऐसे बोल सकते हैं कि एज नीडेड आपको जो भी इंटरनल आपका काम करना है सस्टेनेबिलिटी के लिए तो वो आपको करना पड़ेगा, बट ये रिपोर्ट जो मैंडेटरी पब्लिश करना है दैट इज टू बी एनुअली. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन प्रीवियस टू दैट वीक, विथ रेफरेंस टू BRSR कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट ए, it will replace the existing BRR, that is Business Responsibility Report, and B, BRSR will be applicable to the top 1000 listed entities by market capitalization. So these are the multiple options. Only A is correct, only B is correct, both A and B correct, and none of the above. So जैसे आप देख पा रहे हो, BRSR का जो प्रीवियस वर्जन था वो था BRR, और उसके बाद जब सेबी ने BRSR को लॉन्च किया तो आइडियली ये रिप्लेस करता है BRR को. So this replaces to the previously BRR. So, and it is mandated for top 1000 listed entities. So that's correct. So both A and B are the correct answer for this question. But as you can see, there are multiple people who thought the other statement was wrong. So please check why you thought so, and do let me know if you have any genuine reason or why you got confused about it. Okay. So reporting framework under which top 1000 listed companies by market capitalization are mandated to disclose more details on this video. So I have already prepared one detailed video on the BRSR. So as you can see on the screen, they see a job post and they mind map. Okay, so BRSR SEBI circular. So one of the session in Saturdays for sustainability learning. So we had discussed this in detail, BRSR mandate. So you can watch it from here. The next question is, what does GRI stand for in terms of course, sustainability? I understand there might be multiple full forms, but when we talk about sustainability, so GRI is Global Reporting Initiative. And as you can see, there are many people who have selected different answers. So I might not say that is entirely wrong. Maybe for some organization, maybe they have Green Reporting Initiative, that's possible. But if we consider the holistic
comprehensive view at a global scale, GRI is popularly known as Global Reporting Initiative. So GRI stands for Global Reporting Initiative. It's an international independent organization that provides a widely recognized framework for sustainability reporting. And if you want to know more about GRI, I have given the link of GRI where you can see what exactly GRI is, what are the different elements of it, how any organization can use the GRI reporting framework. So one of the important thing that I liked about GRI is the stakeholder management, the double materiality. So that's something important. All right. So next move to the last question for this video, which is, what is the literal translation of Vasudhaiva Kutumbakam? So as you can see, around 78% people answered it correctly. The world is one family. Vasudha Iva Kutumbakam. Vasudha is earth, Iva means like, and Kutumbakam like is family. So world is one family is the literal meaning of the Vasudhaiva Kutumbakam. And it's a very interesting concept, interesting thought process, and I would recommend you to watch this video. I have already prepared it both in English and Hindi. Hello all, welcome. So how Vasudhaiva Kutumbakam relates to sustainability, so that's in detail I have prepared, so you can watch it over there. All right, so I'll stop here for this month, and again maybe I'll also prepare some of the videos for previous content as well as one video, but I'll stop here for now, and quickly I'll include the Hindi questions as well, because these are just the translation. So for those who are watching only English content, so thank you so much, and please join the channel to stay connected. तो अभी हम जो पिछले वीक के कुछ क्वेश्चंस हैं तो उनको अभी हम देखते हैं. तो पहला है, कंपनियों को व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्टिंग BRSR कितनी बार प्रकाशित करना चाहिए जो मैंडेट है. तो 93% लोगों ने सही यहाँ पे सालाना, दैट इज़ ईयरली सिलेक्ट किया है, दैट्स करेक्ट. और अगर आपको लगता है कि ये अर्धवार्षिक है और तिमाही है और जो भी अदर आंसर हैं, तो आप एक बार चेक करें कि आपको ऐसा क्यों लगता है, और अगर कोई आपका वैलिड पॉइंट हो तो प्लीज़ शेयर करें, बिकॉज इसी तरीके से आपके कॉन्सेप्ट रिफाइन होते जाएंगे. सेकंड क्वेश्चन जो था, BRSR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. पहला ये था सेंटेंस, यह मौजूदा व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट दैट इज़ BRR बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट की जगह लेगा. और सेकंड, BRSR बाजार पूंजीकरण के आधार पर शीर्ष 1000 सूचीबद्ध कंपनियों पर लागू होगा. तो ये दोनों भी BRSR के लिए करेक्ट है, दोनों सही हैं. ये BRR जो प्रीवियसली था उसकी जगह BRSR ले रहा है, और सेकंड चीज़, ये टॉप 1000 लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशंस है तो उन सब के लिए ये मैंडेटरी होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, GRI का क्या अर्थ होता है. ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव. अगर हम सस्टेनेबिलिटी को एज अ ग्लोबल लेवल, कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पर देखते हैं तो GRI का मीनिंग होता है ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव या वैश्विक रिपोर्टिंग पहल भी आप उसे अगर हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो ऐसे देख सकते हो. बट इसके GRI के काफ़ी अलग और भी फुल फॉर्म्स हो सकते हैं रीजनल कॉन्टेक्स्ट में. बट अगर हम वैश्विक लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर अगर बात करते हैं तो ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव ये काफ़ी पॉपुलर टर्म है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के लिए. और जो लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे इस वीडियो में, वसुधैव कुटुंबकम का शाब्दिक अनुवाद क्या है. तो वसुधैव कुटुंबकम ये एक इंडिया की, भारत की, पूरी दुनिया को दी गई एक बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही बढ़िया ऐसा धरोहर मैं इसको बोल सकता हूँ, और इसका एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैंने क्रिएट किया है. बट वसुधैव, वसुधा का अर्थ होता है पृथ्वी, एव मतलब जैसे कि, एव कुटुंबकम, सो कुटुंबकम इज़ फैमिली. सो दुनिया, सारी दुनिया एक परिवार है, कुटुंब की तरह है. तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ वसुधैव कुटुंबकम. तो ये वीडियो हिंदी में है जो आप अभी स्क्रीन पे देख पाओगे. सो आई होप दिस was helpful for you,
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए, और ये सारा कंटेंट देखने के लिए प्लीज़ डू ज्वाइन द चैनल, और इसके जैसा काफ़ी बढ़िया कंटेंट, एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको मिलेगा। आपके बहुमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। विल मीट अगेन। थैंक यू।